Hi guys, welcome back to another new video. So it's me with Naga once again, and then today I just came back from work and now the time is 7:48. So let's make some refreshment. Yeah, I will make cold coffee. So शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे खाली बोतल ले लिया और आप एक किसी का बोतल भी ले सकते हो। और मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी यहाँ पे मैंने टिफ़िन पे स्टोरेज करके रख दिया, क्योंकि जो पैकेट में रखते हैं तो स्टिकी हो जाता है। 2 स्पून मैंने कॉफ़ी डाल दिया और आप भी डाल सकते हैं कितना चाहिए क्वांटिटी के हिसाब से। तो और फिर मैंने यहाँ पे शुगर भी डाला। मैंने ज़्यादा डाला शुगर क्योंकि मुझे स्वीट अच्छा लगता है, और आप भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और क्वांटिटी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला, और पानी डालने के बाद मैंने अच्छा से शेक किया। जो होता थिक फॉर्म नहीं हो जाता, तो इतना सा आप भी कर सकते हो। तो मेरा हो गया, तो ये मेरा कप। और या मैं थोड़ा आइस क्यूब डालेगा यहाँ पे। सो दूध मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ था ठंड होने के लिए, तो आप बिना बोल के भी डाल सकते हो। और मैंने बोल किया क्योंकि मुझे बिना बोल का अच्छा नहीं लगता। और डालने के बाद ये रहा मेरा कॉफ़ी तैयार। तो मैंने सारा डाल दिया है। So now my cold coffee is ready. So as usual, I brought the grapes again. As usual, I'm going to put the salt. I will soak another 5 to 10 minutes. I'll keep here. So after washing my face, I usually don't apply anything because my face is oily skin. Yeah, let's go for dinner. So leftover meal I'm going to fill up here for tomorrow morning. So I'm going to boil with potato and some cabbage.
add some salt. King chili, and this is my favorite. You can call it oil and you can call it fat oil. I will let it boil for another 5 to 10 minutes. Already. I'm going to do a stir fry. This all the ingredients. I have added onion, French beans and capsicum, and along with some tomato. So I had already put the oil, little oil. I'm going to fry a simple way without adding any masala, but if you like you can add any masala in here, but for me I don't prefer masala. So yeah, let it fry in the simple way without adding any masala. I'm going to add some salt for taste, and I did not even add any chili as well, only the capsicum is there. So let it stir fry well. Just cook for another 2 to 3 minutes in low flame. So this is my dinner. This is soya bean chutney and stir fry, aloo gobi curry, and yeah, some steamed rice. So let's begin. I got one of my favorite things here, and thank you for watching. Bye.